Hi, welcome back to my channel. My name is Satyajit Patnaik. आज का वीडियो is very simple. It's not on random forest, it's not on decision tree, it's not on machine learning, it's not on data analytics. It is about me. Most of you have already asked me on LinkedIn, on my channel, on various other platforms कि sir, what is your journey? How did you become a data scientist? क्या आप अपना करियर डेटा साइंटिस्ट के हिसाब से स्टार्ट किए थे और यू ट्रांजिशनड? सो ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो. I will be using both English and Hindi, and I believe that all of you are quite well versed with Hindi as well. But in case you are not, we'll try to add some subtitles as well. So, long back, I did a video on how I moved to Hong Kong. It's really a great journey for me on how I landed up in Hong Kong. You can go ahead and watch out that video in case you are interested to know about particular that story. But अगर आपको मेरा जन्म कुंडली जानना है on how I started my journey into IT, फिर डेटा साइंस में कैसे मूव हुआ, कौन सा कोर्स किया था, कैसे पढ़ाई किया था, exactly everything. So it's going to be a long video and dedicated. This video is dedicated to all my real followers जो मुझे एक्चुअली में फॉलो करते हैं from day one of your journey. I will make sure that you will love this video. Watch out till the end. And last को वीडियो के एंड में we are also going to give an announcement. The announcement is about how to find jobs abroad. So छोटा सा announcement रहेगा, but we'll have a separate video on that particular topic soon on my channel as well. So let's get started. Okay, so very few of the people who follow my channel know about my background. Many of you are not aware of my background. So I'll give you a brief idea about my background, कहाँ से मैं हूँ and all those things, and I'll make sure I will answer most of the questions. Just in case you think I am not able to answer any of the questions that is in your head, post it in the comment section below so that I will revert back as a reply. तो चलो स्टार्ट करते हैं. My Hindi is not that great, honestly speaking. I'm coming from Odisha, and I'm not telling that all people from Odisha are very bad in Hindi, but थोड़ा सा ज़्यादा percentage of the people are kind of bad in Hindi, but we are good in English. हिंदी में थोड़ा की का ऐसा हो जाता है, मेल फीमेल थोड़ा इधर उधर हो जाता है, सो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ माई एजुकेशन. मैं अपना एजुकेशन अपना 10th 2005 में कंप्लीट किया, 12th अपना 2007 में कंप्लीट किया, एंड I was a decent student. मेरा 10th में almost 90% मार्क्स था, 12th में almost 85-86% मार्क था, एंड मैं CBSE से पास आउट हूँ. सो मेरा इंग्लिश थोड़ा ओके है. I won't say it's like the perfect, but ओके है, मैनेजेबल है. उतना मैनेजेबल है कि I have been sustaining in the IT industry, and I'm sure I can address 2000 people or more than that as well in a public forum. उतना क्वालिटी है मेरे इंग्लिश में. नाउ टॉकिंग अबाउट माई एजुकेशन, आई स्टार्टेड माई एजुकेशन इन 2007. आई एम टॉकिंग अबाउट माई बैचलर्स डिग्री, एंड एज यूजुअल इंडियन फैमिलीज पुश द किड्स टू बिकम एन इंजीनियर. अगर इंजीनियर कुछ नहीं होता तो इंजीनियर या फिर डॉक्टर, राइट? एंड स्टीरियोटिपिकल फैमिली से हूँ मैं, एंड माई फादर वॉज ऑलवेज इन अ मूड टू मेक मी अ डॉक्टर. सो मेरे को ज़बरदस्ती 12th में बायोलॉजी दिलवाया था पापा ने. somehow I kind of convinced him that I'm more towards computers than biology, so I kind of moved towards engineering line rather than being a doctor. So engineering में back in my days in 2007 हमारा 2 एग्जाम हुआ करता था. One used to be Odisha JEE OJEE and one used to be AIEEE. आजकल I think Odisha JEE is closed. I think AIEEE के basis पे ही सब कुछ होता है. So Odisha JEE में unfortunately my rank was bad, towards 4000,
which is really bad. But AIEEE में मेरा रैंक था almost 1400, which is really good. But प्रॉब्लम ये हुआ कि ओडिशा जेई का रिजल्ट पहले रिलीज हुआ एंड फिर AIEEE. सो ओडिशा जेई के रिजल्ट के हिसाब से आई गॉट टू वन कॉलेज whose name is NMIT, and that's where I studied my 4 years of engineering. NMIT is a very small college in Bhubaneswar, where I am coming from. I come from Bhubaneswar, Odisha. Uh, it's just one of the colleges under umbrella called as Biju Patnaik University of Technology, BPUT. So ओडिशा जेई के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ. माय फादर गेव अ टोकन मनी ऑफ 50 और 60,000 एंड फिर AIEEE के हिसाब से आई वाज गेटिंग अ बेटर कॉलेज, इनफैक्ट वेरी गुड कॉलेज. मैंने मतलब आई वाज गेटिंग सिलिकॉन इज वन ऑफ द कॉलेजेस इन भुवनेश्वर विच इज रियली गुड. लाइक एटलीस्ट बैक इन माई डेज इट वाज टर्म्ड एज द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज. Unfortunately, as my money was already given there and my financial conditions were not great, in fact below average tha mera financial condition, so I just carried on and I just started studying in NMIT. Luckily I was a decent student. मेरा engineering career में एक भी back नहीं था. I ended up in 8.3 CGPA and I ended up with 4 or 5 offers in hand. 2 मेरे college से मिला था and 2 offers I got it offline, like off campus. And finally I joined Amdocs, which is a telecom based company based out in Israel, and I joined the Pune office. अब Amdocs में I was lucky enough to get into development. 1200 students आए थे off campus में and only 6 or 8 were selected. Out of those 8 students, I think 4 or 5 were pushed into the development team and 3 or 4 were pushed into the testing team. I was lucky enough to be a part of development. So जावा में मेरा फर्स्ट करियर स्टार्ट हुआ. अब 4 years चला गया 2011 से लेके 2014-15 तक. सो ऑलमोस्ट 4 साल बोल सकते हो. आई केप्ट ऑन डूइंग जावा. मेरा ज़्यादातर मन स्नूकर में लगा रहता था. इन माई कंपनी वी यूज्ड टू हैव अ पूल टेबल. वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उधर ही पड़ा रहता था. लाइक अपना काम कर देता था थोड़ा and then I used to play. And again मेरा गेमिंग करियर के बारे में भी बाद में बात करूँगा. आई एम अ गेमर. मैंने नेशनल लेवल पे कुछ FPS गेम्स खेला है एंड स्नूकर ऑल्सो आई होल्ड सम ऑफ द रिकॉर्ड्स एज वेल. आई मीन नॉट रिकॉर्ड्स बट कॉर्पोरेट इवेंट्स जीता है हमने महाराष्ट्र में. सो आई टॉक अबाउट दैट पार्ट लेटर ऑन. आज सिर्फ पढ़ाई के बारे में है, on how I did my transition to data science. So we'll keep it simple. I mean, I cannot just open up my entire life book in just 15-20 minutes, right? And if I start talking about it 20-25 minutes, the video will be boring. So sports और gaming के बारे में बाद में बात करेंगे. And I have a lot to talk about on that topic as well. Coming back, 2015 में आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस टॉपिक कॉल्ड एज मशीन लर्निंग. अब AI हमारे 7th सेमेस्टर में हमने पढ़ा था. वी टुक इट वेरी लाइटली कि क्या ही होगा, मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब टॉपिक्स का क्या ही यूज़ होता है लाइफ में. सो वाज लाइक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ ऐसा ही होगा. ऊपर से जा रहा था बैक इन 2010. 2015 में मेरे दोस्त ने बोला मुझे मशीन लर्निंग के बारे में एंड आई वाज लाइक क्यूरियस अबाउट द टॉपिक बिकॉज ही एक्सप्लेन मी इन अ वेरी लेमैन्स टर्म कि उसका बैकएंड जो है पूरा स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स है. एंड आई हैव बीन गुड इनटू मैथमेटिक्स सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. लाइक मेरे बचपन से ही आई हैव बीन गुड इन मैथमेटिक्स. ऑलमोस्ट सारे बोर्ड एग्जाम्स में आई यूज्ड टू स्कोर 100, 98 समथिंग लाइक दैट. एंड when I was in class 8th, I also competed with class 10 students for mathematics Olympiad और मेरे पास मेडल भी है. So mathematics में I was good. So I thought कि अगर ये स्पेस जो है मशीन लर्निंग का स्पेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के बारे में है, let's try to explore. So I explored, I took a course. Immediately I took a course. मेरे को गूगल पे जो टॉप पे दिखा I took it. I'll be very frank, मैंने एडुरेका का देखा था, बहुत बजट के बाहर था.
कोई तो एक कोर्स लिया था, आई डोंट रिमेम्बर, 35,000 मैंने पे किया था. ओके, एंड आई टुक इट. जस्ट आई वॉज अटेंडिंग कपल ऑफ क्लासेस एंड देन आई चर्नड आउट. मैं कुछ भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया. आई फेल्ट बोरिंग. बट मेरे को एक स्ट्रक्चर मिल गया कि ये टॉपिक्स जो है पढ़ना है. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस टॉपिक्स इन डेप्थ. क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन का मैथमेटिक्स, पीसीए, सब कुछ मैं इन डिटेल्स पढ़ने लगा. मल्टीपल ब्लॉग्स, मल्टीपल वीडियोस. 6-7 महीने मैंने प्रॉपर दिए मेरे पढ़ाई को. And luckily in 2016, I did my internal transition from Amdocs development team to support team. अब Amdocs का एक support team भी है, which is called as GSS. They do L1, L2, L3 support. और most of the support teams के पास ज़्यादातर real time data भी होता है. They have access to all the complaints, issues and all those things. So actually customer को क्या चाहिए, lot of things they have that. So मेरा ट्रांजिशन उस टीम में हुआ. ऑफिशियली तो टीम का नाम GSS ही था, but they were doing some analytical work, some sort of analysis they were doing. They were also building dashboards, reports. So थोड़ा सा इंक्लाइन था मेरा मशीन लर्निंग और BI की तरफ, but it was not exactly मशीन लर्निंग. तो मेरे को वहाँ से अच्छा खासा आइडिया मिला on how things works into analytics and all those things. 2017 में मेरा एक्चुअली फर्स्ट ऑफिशियल जॉब ट्रांजिशन हुआ ब्रिटिश टेलीकॉम में. उसका स्टोरी भी बोलता हूँ, बहुत फनी है. 2016 में शादी हो गया एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट क्लोज टू कितना हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऑलमोस्ट 6 साल तो हो गया मेरे शादी को. 2016 नवंबर में शादी हुआ. My wife was in Bangalore and I was in Pune. And that was my first motivation to switch. अब शायद शादी नहीं होती या फिर मेरी वाइफ पुणे में होती तो शायद I wouldn't have become this successful और मेरा सैलरी शायद अटक जाता कहीं पे. I don't know. Things would have been different. But by God's grace, I was lucky enough. मैं स्टार्ट किया अपना जॉब हंट बैंगलोर में. एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी. पुणे से बैंगलोर ढूंढना वॉज डिफिकल्ट बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बैंगलोर में जितने भी HRs हैं उनको लोकली बंदे मिल जाएंगे. वाई वुड दे हायर समबडी फ्रॉम पुणे एंड गिव देम रिलोकेशन फीस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन Zorient, XORIANT. अब मशीन लर्निंग में मुझे मिला नहीं and I finally got a job into Zorient in late 2016, yeah 2017, early 2017. But मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला जावा में. I was very skeptical कि मुझे ये जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, because I already have 1.5 year experience into machine learning, not exactly machine learning but statistical analysis and all those things. अब मैं अगर जावा में चला गया तो मेरा करियर could be different. But शादी करके I had to move. I had no other option, so I moved. I moved to Bangalore with Zorient, but I was lucky enough to get a call from British Telecom, and उनका call जो आया मुझे, it was I mean, you cannot imagine. अब एक बंदे को जावा का नॉलेज है और उसको मशीन लर्निंग सीखना है, ऐसा जॉब मिलना इज ऑलमोस्ट 1 out of million केसेस कि कोई कंपनी है जो जावा के बंदे चाहिए उसको और ऐसे बंदे चाहिए जो मशीन लर्निंग में भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो और घुसना चाहे. एंड उस टाइप का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला. दे वांटेड टू हायर अ जावा एक्सपर्ट और जावा प्रोफेशनल विद सम माइन्यूट नॉलेज इन मशीन लर्निंग. सो आई वाज लकी इनफ टू गो इनटू दैट. अब मुझे ब्रिटिश टेलीकॉम में प्रॉपर 3 months टाइम मिला कि भाई तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को पढ़ना है, तेरे को टाइम सीरीज फोड़ना है, तेरे को इवेंट कोरिलेशन का पार्ट फोड़ना है विच इज एप्रियोरी एंड इक्लैट, तेरे को कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स फोड़ना होगा लाइक आउटलायर डिटेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो 3 months आई गेव माई 9 hours a day in office, 3 hours a day in the evening. 3 महीने में आई वॉज सो कॉन्फिडेंट इन टाइम सीरीज.
ट्रस्ट मी, इतना कॉन्फिडेंस मेरे को लाइफ में कभी नहीं मिला था. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. ब्रिटिश टेलीकॉम में आई वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 year, more than 2 years I worked in British Telecom. एंड मेरा जो करियर में जो स्पाइक आया है, आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू मनीष शुक्ला एंड साई. बोथ ऑफ देम वर रियली गुड. मनीष वॉज माई मैनेजर एंड साई वॉज माई मेंटोर. उनके बिना तो शायद आई कुड हैव रीच दिस स्टेज. सो आई मीन रियली हैट्स ऑफ टू देम फॉर सपोर्टिंग मी. एंड मेरा ग्रोथ भी ब्रिटिश टेलीकॉम में बहुत अच्छा हुआ था. यू विल नॉट बिलीव, मेरा 2 साल में ऑलमोस्ट 4 बार हाइक हुआ था. एवरी 6 months हाइक एंड ईयरली हाइक एज वेल. सो मेरा सैलरी जो था द मोमेंट आई जॉइन बीटी वॉज ऑलमोस्ट 12 था. 6 साल के एक्सपीरियंस में 2017 6 साल के एक्सपीरियंस में 12 था. उससे पहले 8 था, उससे पहले 6 था. सो 12 lakhs तो आजकल फ्रेशर्स लोग कमाते हैं. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन IIT नॉन NIT स्टूडेंट्स. 6 साल एक्सपीरियंस में 12 था एंड आई मूव्ड इनटू 21 और 22. ऑलमोस्ट डबल हाइक पे मैं मूव हुआ विद इन ब्रिटिश टेलीकॉम. 4 बार हाइक्स लेके. एंड आई एक्सप्लोर्ड, आई बेसिकली आई वांटेड टू मूव अब्रॉड. मेरे को अब्रॉड जाने का बड़ा मन था बचपन से कि चलो एक्सप्लोर करते हैं. बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज. वाइल आई वॉज एन Amdocs, while I was a Java developer, I have already traveled more than 10-11 countries. तो मेरे को बाहर का कल्चर, बाहर का ये मेरे को अच्छा लगता है, especially in the Asian market. So I started my job hunt in 2019 in Jan या Feb. 6 महीना dedicatedly I applied for jobs, more than 10,000 jobs. People don't believe it. People say कि यार ये लकी है, ये लकी है हांगकांग मिल गया, ये लकी है US मिल गया इसको. People think that other people are lucky, but in short, other people are not lucky. They find their way. They are patient enough. They find their way. वो लोग भी मुश्किल से ही वहाँ तक पहुँचते हैं. So लकी कोई नहीं होता, थोड़ा सा लक फैक्टर होता है, but you cannot call them as lucky. I tried for 6 months. 10,000 से भी ज़्यादा जॉब्स मैंने अप्लाई किए. यू विल नॉट बिलीव, आई अप्लाइड फॉर जॉब्स इन उगांडा एज वेल. उगांडा, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका. मेरे को साउथ अफ्रीका से 2 या 3 कॉल आया था इंटरव्यूज़ का. जर्मनी से 5-6 कॉल्स आए थे. ऑस्ट्रेलिया से 1-2 कॉल्स आए थे. सो मल्टीपल कॉल्स आए थे मुझे. सिंगापुर में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एज अ को-फाउंडर इन वन ऑफ द स्टार्टअप्स. अब मैं शायद वो जॉब एक्सेप्ट करता तो आई वुड हैव बीन अ बिलियनियर राइट नाउ, बिकॉज दैट स्टार्टअप इज डूइंग वंडर्स. बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. आई अप्लाइड सो मेनी जॉब्स. अब मेरे को 3 जॉब्स फाइनली मिला. एक जर्मनी, एक थाईलैंड और एक हांगकांग. जर्मनी वॉज आउट ऑफ स्कोप इवन इफ आई वॉन्टेड टू गो, बट आई कुडंट गो बिकॉज इकलौता बच्चा हूँ मैं, इकलौता चाइल्ड हूँ पेरेंट्स का. सो आई वॉन्टेड टू स्टे क्लोजर. जापान हो गया, हांगकांग हो गया, आई एम फाइन टू मूव बिकॉज 3-4 घंटे 5 घंटे में आप इंडिया पहुंच सकते हो. थाईलैंड वॉज अ नो फॉर मी बिकॉज करेंट सैलरी पे ही था मेरा. करेंट सैलरी पे 10% का हाइक था विच आई डिडंट फील लाइक कि ये लेना चाहिए. हांगकांग वॉज ऑलमोस्ट डबल सैलरी, बट अगेन 40 lakhs इन हांगकांग इज नथिंग, राइट? बिकॉज एक तो एक्सपेंसिव शहर है, बहुत सारे खर्चे होंगे, बट आई काइंड ऑफ टुक इट. एंड राइट नाउ आई एम ऑलमोस्ट आई मीन एट अ गुड salary. I will not reveal the salary. Maybe some of my current team members might be watching. So I'll not reveal the salary. But yeah, I'm currently in a very good state. तो मेरे को ये भी मिलता है. One thing I also forgot. In my journey, I'll also talk about how I entered into education. या फिर इसका एक अलग वीडियो भी कर सकते हैं. Do you think I think let's do another video for this. If you think there should be another video, please let me know in the comment section on how I entered the education world, how I started my YouTube journey, how I started my Udemy, how I started teaching, and how I
became more vocal. Because earlier days, you will not believe, 2015 2016 में I was like, I had a stage fear. स्कूल डेज में तो छोड़ दो, कॉलेज में भी छोड़ दो, आई वॉज सो शाय. मेरे को कोई बुला दिया कि ऐसे बोलना है, ये बोलना है, आई वॉज सो नर्वस. मैं स्टेज फियर मेरे को डे 1 से होता था. बट राइट नाउ आई डोंट हैव. आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर्स इन फ्रंट ऑफ 1000 people. I have been to multiple universities as a keynote speaker. I have recorded more than 350 videos on my channel. I have recorded more than 6 to 7 Udemy courses. Apart from that, multiple other educational platforms में मैंने courses दिया है, videos दिया है. So वो stage fear, वो video fear वो चला गया है. So I'll make another video on that part. But again, let me know in the comment section below. Apart from that, also let me know any other things you want to ask me or anything that I have not addressed in this video. I hope you enjoyed this video. That was all about myself. Technical video on a particular topic. I am already releasing videos on predictive analytics. So technical video will be launched. So what I've thought is technical videos हर Sunday या Monday launch करेंगे, release करेंगे. And इस type के videos कुछ general topics पे we will be releasing every Wednesday or Thursday. Stay tuned. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe the channel. And don't forget to comment in the comment section below on anything. See you in the next video. Till then, bye-bye.